Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective. I let my guard down. Swift and merciful!
Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. Unexpected, but welcome. Just sharpen my spear! I will protect you. Steady as... My experiment. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Confess! One with my blade. Submit for judgment. No, my sword! Forth my blade.
From whence you came! Can't fool me! Truth hurts! Rain cutter! Rain outlines your fate! Time to act! One with my blade! Submit for judgment! Fracture! Cyclone! Absorption test! Animal hypostasis emulation! Witness the power of Gugwa! From whence you came! A touch of frost! There is no purer form of water than rain. It can aid us greatly in the purging of evil. From our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Spirit Blade, attack!
One with my blade! The power of water is its ability to take any shape. Keep moving! Submit for judgment! Forth, my blade! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. One with my blade! Barely a scratch, a touch of frost. Animal test 6308. Spirit blade, attack! Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. One with my blade! Truth hurts! Enhanced Animal Module 75. Swift and merciful! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Submit for judgment! Forth, my blade! But how? Confess! Bring it on! Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. Time to act. No, my sword!
One with my blade! Stand clear! From whence you came! Ring cutter! Forth, my blade! Body and mind. Keep moving! Time to act. A touch of frost after all that training. Forth, my blade! Rain outlines your fate. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. I haven't been out in a while. Had I no moral compass, my efforts would have been misguided. Doomed to grasp at shadows, while missing the substance, I would have become... Had I no moral compass, my efforts would have been misguided.
I just need a moment to quickly take down some notes.
हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो दिलावर भाई, हेलो जनरल डूम भाई, कैसे हो? अरे यार एशिया सर्वर पे खेल रहा हूँ डूम भाई। दिलावर भाई गेम मस्त है, बट यार इसमें इशू क्या है ना, अभी समझने में अपने को टाइम लगेगा। अपन पबजी वाले हैं तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है अभी ना। काफ़ी चीज़ें समझ रहे हैं, देखते हैं यूट्यूब पे अच्छे लोगों को, पर समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। आपकी कौन सी आईडी है? आपकी आप कौन से लेवल पे हो? क्या एआर है आपका? एआर रैंक क्या है? मेरा बैकग्राउंड साउंड ना थोड़ा गंदा आ रहा होगा तो यार प्लीज़ मैनेज कर लेना। अच्छा मेरे तो दोस्त ने बताया, उसने बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे करके गेम है, मैंने खेली, मज़ा आ गया। मैं बोला भाई ये तो उससे बढ़िया है। अरे भाई साहब 56 पे बैठे हो, लेजेंड ब्रो। कोई टिप्स ट्रिक्स दीजिए यार दिलावर भाई। कौन कौन से प्लेयर है आपके पास? आपने कैसा कैरेक्टर कैसे बिल्ड किए हैं? कैरेक्टर कैसे बिल्ड किए हैं? मेरा तो अभी तक 5 स्टार भी नहीं निकला, पता है? कोई 4 स्टार ही हैं सारे। अच्छा ठीक है, मैंने मैप तो पूरा खोल दिया वैसे, अब स्टोरी ही करूँगा। ये देखो इनाजुमा भी खोल दिया पूरा। इनाजुमा वगैरह सब पूरा खोल दिया है। ये मैप पूरा खोल दिया है। ये अब देखो चेस्म भी खोल दिया आधा। काफ़ी रह गया, मतलब काफ़ी कर दिया, काफ़ी रह गया। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े से ना कैरेक्टर बड़े कर लूँ, क्योंकि दिखे नहीं। आर्कॉन क्वेस्ट ये कहाँ पे है दिलावर भाई? कहाँ पे जाना पड़ेगा बताना। ये क्वेस्ट में है क्या? आर्कॉन क्वेस्ट, आर्कॉन क्वेस्ट, आर्कॉन आर्कॉन मेन स्टोरी क्वेस्ट में आर्कॉन क्वेस्ट देखता हूँ। स्टोरी क्वेस्ट मेरे में अभी खुला ही नहीं है दिलावर भाई, आर्कॉन क्वेस्ट। अभी खुला नहीं है यार मेरे में। आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा दिलावर भाई अपनी आईडी से, अपन खेलेंगे। आप मेरी हेल्प करना, ठीक है? मेरे को सिखाना यार, सबसे ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके 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 ओके। इसका क्या बेनिफिट होगा दिलावर भाई आर्कॉन क्वेस्ट करने का? अच्छा रैंक अप। ये भी 30 वो दे रहे हैं। उसमें पर अभी पता नहीं इसमें क्या चक्कर है। ये रैंक वैंक छोटा है मेरा, कह रहे शायद से। कंप्लीट द अदर क्वेस्ट टू कंटिन्यू। कौन से क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं? कंप्लीट एक्ट, क्या 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 बोला इसने? एक्ट 1 टू स्टार अप, स्टार दिस क्वेस्ट कंप्लीट। ओ यार अच्छा, काफ़ी सारे क्वेस्ट बचे हुए हैं, वो कंप्लीट करने बोल रहे हैं लोग। काफ़ी सारे क्वेस्ट बचे हुए हैं ना, ये करने को मना कर रहे, ये करने को बोल रहे हैं लोग, फिर ही खुलेगा वो।
अभी मैं करूँगा इसको ना, आज कर दूंगा यार। अरे भाई अब ये भी आ रखे हैं, ये वाला कर देते हैं। कमीशन मिशन मार देते हैं पूरे यार, 10 मिनट का काम है। ये नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। कमीशन मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कौन कौन से कैरेक्टर है दिलावर भाई, टाइप करके बताइए। 5 स्टार कौन कौन से हैं आपके पास, अबव 90, सॉरी अबव 80। One with my blade. Confess. Let me weave you a verse. Spirit blade. Attack. नहीं टोटली 5 स्टार कौन कौन से हैं आपके पास? टोटल तो होंगे बहुत सारे, पता है मुझे। A touch of frost. Swirl, Mark 2. 7, ओ भाई। आपके पास ड्यूलू है क्या? ड्यूलू जो आज नया बैनर है, जो आज नया बैनर आया वो है क्या? क्या नाम है उसका? योशिदा, योशिना, योमीमा, महबूबा, पता नहीं क्या नाम है। वो है क्या आपके पास? भाई इनके नाम बड़े गंदे हैं यार, याद नहीं होते, बहुत बोरिंग नाम है इनके। अरे क्रैब पकड़ लिया भाई ने, अब खाएंगे इसको पका के साले को। ओ भाई 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 यार, आप तो कतई कितना टाइम से खेल रहे हो भाई आप ये? ओ भाई वो क्या लेवल कर रखी है भाई आपने? आपके तो इक्विपमेंट भी 5 स्टार होंगे भाई। क्या भाई मजा आ गया भाई, सही है भाई। ओ भाई 1 साल हो गया मेरे को, अभी पता है 15 दिन भी नहीं हुए। ये सब 15 दिन में क्यों मैं यार 35। आप बहुत मुश्किल से बढ़ रहे हैं रैंक पर कोई बात नहीं, हार्डली 3 मंथ्स। मैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर था, तो इसमें भी कुछ टोकन दिखाएंगे ना, सीखते हैं अभी थोड़ा, अभी ग्राइंड करना पड़ेगा इसमें ना। मैंने अपना मेन डीपीएस चोंगयुंग बना रखा है अभी, पता है। भाई हंसना मत अभी, पर अभी यही सहारा है, क्या करें। अरे हिलेचर्स बहुत तंग करते हैं। A touch of frost. समझ नहीं रहा है, ये समझ नहीं रहा है दिलावर भाई, ये समझ नहीं रहा है। मेरे में आ गई पावर, ये समझ नहीं रहा है। अभी मारता हूँ, को एलिमेंट देता हूँ। मुक्के खाने इनको। पंगा ले रहे हैं भाई, ये बताओ यार, गुस्सा चढ़ा दिया मैंने फ्लोर को। भाई माफ कर दे इनको, छोड़ दे यार। साले पीछे से नहीं दे रहा है। Submit for judgment. Get moving. Rain outlines your fate. One with my blade. और टक्के पा दिए भाई ने। हाँ भाई मजा आ गया भाई। अबे My blade. टॉर्च जला रहा है ये। भाई होजो बड़ा ये होइजू बड़ा खतरनाक प्लेयर है यार, बहुत तगड़ा है ये, पता है 4 स्टार में अभी 1 नंबर पे चल रहा है। मेरे को इसका ब्रस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपके पास है क्या ये दिलावर भाई, आपके पास है क्या ये होइजू?
अभी इसके प्रॉपर वेपन नहीं दिए मैंने इसको, पता है, फिर भी बहुत मार रहा है। अच्छा बढ़िया यार, बढ़िया है ये, पता है, एक नंबर है ये। ये रहेगा ना इसके, एक तो ये इसका एक तरह से कह लो ये रिचार्ज भी बहुत कम है इसका। One with my players. मेरा चोंगयुंग C1 है, C1 है दिलावर भाई। ये देखो मेरा चोंगयुंग है ना, ये C1 है ये, इसीलिए मारता है ये। आइस अनलिस्ड है ना इसका ओपन भाई, ये बहुत गंदा मारता है। इसका जो वो एक उछल के जो तलवार मारता है ना, बहुत तगड़ी है इसकी। और मेरे पास ये मेरा जो ये होइजू है, अच्छा चढ़ रहा है क्या? मैं भी क्या यार भाई, हंसना मत यार, नूब हो गया मैं भाई, चढ़ते हुए कैरेक्टर चेंज कर रहा हूँ भाई। ओ भाई मारो मारो मुझे मारो। ये भाई होइजू, भाई होइजू बहुत खतरनाक है, मेरे को बढ़िया लगता है भाई है। शायद मेरा होइजू भी C1 है, पता है, ये देखो C1 है मेरा होइजू, मेरा C1 है होइजू। इसीलिए इसकी मूवमेंट ज़्यादा। C1 तो बैट बहुत बहुत अच्छा है भाई, मतलब लिटरली है ना, आप कह लो मेरे को उठा रखा है इसने, मैंने इतना अच्छा बिल्ड नहीं किया हुआ, फिर भी ये टैलेंटेड प्लेयर है बस इस वजह से। अरे ये पता नहीं भाई तुक्के से निकल गया, बाद में मैंने देखा, मैं कहा भाई ये होइजू कौन सा प्लेयर आ गया बे, इससे कोई वीडियो भी नहीं देखी है, तो बाद में पता लगा ये नया प्लेयर है। हाँ ये पता लगा कि अच्छा प्लेयर है। बताओ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं उसको निकालूं कि नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, चोंगयुंग ने फेल दिया तुमको। अभी मेरी सुक्रोज वेट करती है भाई कि बारी आए मेरी, बताओ बाद में आके ठंडा कर रही है सब कुछ। ओ भाई सुक्रोज के लिए बुरा लग रहा है, बारी नहीं मिल रही भाई इसको, चोंगयुंग सबको फेल दे रहा है आके। टीम बनाऊंगा बहुत खतरनाक भाई, देखना दिलावर भाई, थोड़े दिन रुक जाओ, 20-25 दिन में ना एकदम प्रोपन पे आ जाना है इसमें। नेशनल टीम खतरनाक रखनी है अपनी, देखना नेशनल टीम लेवल बनाऊंगा इसको। ओ भाई कहाँ है और कमीशन क्या है, इधर है क्या? आ रहा हूँ कमीशन में, आ रहा हूँ। दिलावर भाई आप कौन से कंप्यूटर पे खेलते हो? Don't break my glasses. नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा सुक्रोज, क्या डर रही है? बहुत मारेंगे साले। अबे जमा दिया बे, पहले तो इस मंत्र पढ़ने वाले को फेलो साले को। हमारे सुक्रोज गुस्से में, और एक नंबर भाई, मोबाइल में भी अलग ही मजा है भाई, पीसी में तो होगा ही मजा, मोबाइल में पर अलग है, फील अलग है भाई मोबाइल की। आईपैड में तो खास करके ज़्यादा मजा है, आईपैड में और मजा है इस गेम का। मैं मिनी में खेल रहा हूँ, बहुत तगड़ी चल रही है। चलो मिनी डिवाइस भी बढ़िया है वैसे, पर ये बहुत अच्छी चलती है इसमें। वो सस्ते कहाँ जा रहा है तू? अरे मीट दे के जा भाई, भूख लगी है। मारूंगा भाई, अभी जा रहा हूँ ऊपर, देखो अभी कैसा तिरम पाल कर दूंगा, वहाँ पे सबको लाल कर दूंगा, ऐसा मारूंगा सबको, साला देख के भाग जाएंगे लॉबी से। उड़ 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 उड़, साली मर जाएगी। I have taught you everything देखा भाई? I know. किसी ने कुछ देखा ही नहीं भाई, दिलावर भाई आपने कुछ नहीं देखा। आपने कुछ नहीं देखा भाई, ये सब गलती से हुआ है भाई, ये सब गलती से हुआ है।
ओ भाई मारो। मैं बस ये खुजली करने की गलती की वजह से मैं खुजली कर रहा था, जितने में मेरा बंदा पिल गया। अबे ये तो फूट गए अंडे के जैसे। Bring it on! अरे भाई क्या मार रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है ये। भाई क्या मार रहा है ये, क्या मार दिया इसने? अबे बता के तो मार भाई। Spirit Blade! Attack! अबे साले नीचे है वो अंधे। अबे जहर फैल रहा है, जहर फैल रहा है भाई। ये जहरीले को मारो साले को, साले जहरीले कटेले साले आराम खोर। ओ भाई ये ओलंपिक कॉमनवेल्थ इधर काम क्या कर रहा है, इसको कैसे मारूं? अभी रुको बताता हूँ। इसके बैलून को फोड़ो। बैलून किसका भाई? ये तो निकल गए अब हम लोग यहाँ से। चलो आगे चलते हैं। पटक के मार रहे हैं, कांटे कूटे लगा रखे हैं सालों ने। बिल्डिंग भी चाहिए ली है भाई इन लोगों ने। Swift and merciful! ये जो मारता है ना, ये C1 पे खुलता है। ये वाला इसके बैलून को मारना है। अरे पर वो तो सही जा रहा है ना। अरे मुझे पता ही नहीं था, अच्छा क्या बता दिया आपने। कहाँ गया वो भाई? ये उड़ रहा है। अच्छा क्या One with my blade! Submit for judgment! Animal hypostasis emulation! Yeah, stand clear! Hurts!
यार ये पानी वानी के बीच में लड़ना पड़ रहा है यार। This is no job for a detective. अबे मेरा बंदा मर गया बे। यार पहले पता होता कब का जीत जाता मैंने उसको मरवा दिया ना जी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा क्या आपने बता दिया दिलावर भाई यार, थैंक यू। मैंने पढ़ा नहीं वहाँ पे ना, वो बलून को फोड़ने का लिखा हुआ था। अरे अब हम पबजी वाले थोड़ा दिक्कत तो होती है। उसमें बंदा दिखा, पी किया, ठोका। इसमें साला पढ़ो लिखो, साला इतना पढ़ना होता तो 10वीं में कंपार्टमेंट थोड़ी आती है यार। चलो भगवान से प्यार पूजा कर लिए हैं, आशीर्वाद ले लिए भाई, जा रहे हैं अब मारने। अब कहाँ मजाऊँ भाई, अब जाता हूँ मिशन करने। सजेस्ट करिए देख के जरा सर दिलावर भाई, कौन सा करना चाहिए मिशन अपने को, बताइए जरा। खोलो मिशन वाला, रुकिए ये खोला हुआ है मेन क्वेस्ट। आर्कन क्वेस्ट अभी हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ मैंने कोई कुछ ना बीच में छोड़ रखे हैं। तो ये 3 विश देख लूँ, आप टाइप कर दीजिए मैं वो कर दूंगा। ये देखिए नीचे अभी भरा पड़ा है ये। आर्कन वाला हो नहीं रहा है ना दिलावर भाई, ये देखिए यहाँ पे ना आर्कन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अरे आ रहा है हो जाएगा शायद से। ये आर्कन ही है ना, हाँ नेविगेट लग गया। ये I take my आर्कन का ही milk है। cold to quiet the Go to spirit down one and calm my day. vital energies. ये बताएगा कौन सा करना है आपको, वो बताएगा। ओके ठीक है। आर्कन में डाउन वेंट्री जाने को बोल रहा है, वहाँ जा रहे हैं। ये जाने को बोला है डाउन वेंट्री यहाँ पे। और कहाँ से है दिलावर भाई आप? मैं नोएडा से हूँ, वैसे पंजाब से हूँ बट अभी नोएडा हूँ। आपको याद रखूंगा हमेशा कि पहली बार पहले चैनल पे कोई बात करने आया था। पहला बंदा, पहला गर्लफ्रेंड सब याद रहता है ना, मतलब वैसा ही सीन You're है। finally back. आप भी दिल्ली से हो, बढ़िया, नाइस। I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. That's okay. We did offer to help. So anyway, is Master D-Luke back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie सब up कर all दीजिए loose दिलावर भाई, ends. आपको वो It's बना become देता हूँ। something of a routine. क्या बोलते हैं उसको? He should be back वो जो very होता है ना, soon. You needn't आप worry. जो मतलब बाकी In के the कोई और meantime, आएगा तो please make उसका yourself चैट वैट देख comfortable in सकते the हैं, winery. उसको मॉनिटर कर सकते हैं। We managed to completely miss him. मैं कर देता हूँ वो अभी लैपटॉप पे ऑन, Oh, well. अभी ऑन करूँगा। Let's just wait for him at the By the way, जाने hopefully से पहले आपको Oh, करके जाओ। thanks for your... Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. क्या हुआ दिलावर भाई? नोनो क्यों लिख रहे हैं? didn't understand any of that, but That's very kind of you indeed, but you've already helped Master D-Luke out a great deal. You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door.
There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the... Is this a letter? Yes, it's... Ooh, that means... Of course. क्या ये वाला करना नहीं था? ओ यार, इससे काम पकड़ लिया मैंने गलती से। काम नहीं पकड़ना, सीधा अंदर चले जाना था डीलू को मिलने। चलो कोई नहीं, कुछ दे देगी, कुछ फ्री में ले लेंगे इससे। टाइम वेस्ट कर दिया इसने बंदे ने। It looks like Diluc read them just before he left. Adeline asked, guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. Bad idea. You're here. You move fast. Woo! There he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these भाई letters इसकी in a तो अलग ही है pile. भाई, I Diluc can't tell which order they should go खतरनाक in. लगता भाई। But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question. Okay, दिलावर भाई, You can read them if you want to. आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। It's not a bad thing to be curious. एक सेकंड रुको। Hey, that's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. No fair! We still have some super important things to discuss with Diluc. Alright, let's just... Well, since he's... अबे यार, ये मजाक होगा भाई मेरे साथ। चिट्ठियां पढ़वा रहे हैं भाई ये लोग। Huh. Shall we read another? Do you want to keep reading them, or have you got the gist now? Okay, remember, आप भी फंसे होंगे, आप इसलिए बता रहे थे। कहते हैं ना, कुएं में गिर के ही समझ आती है गहराई कितनी है। भाई अब पता लग रहा है। अरे भैया, अंगूठा दुख गया भाई। इतना पढ़ूंगा तो भाई मैं पीएचडी नहीं कर लूंगा क्या? Alright then, let's... चलो भाई, थैंक यू। There's one thing we can take. Not only was he missed, sounds like it's always fighting alone because for one reason or yeah. Plus, he's out of. ओ भरावा, अब भाई ये कौन है? What? ये कौन है भाई? ये कौन आ रहा है? Is there a problem? वो वापस से आ गया। Master कपड़े बदल क्या है? You're wearing your old outfit again? And you've अच्छा, ये tied your चेंज कराया hair क्या? back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yep, it was by that ley line announcement. Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened? The same reason as ever. Just stopping another abyss horde. They launched an offensive on several fronts at once. We were fighting in an... They must have become unstable again recently.
causing them to... For starters, on the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of... Wouldn't that have been... Depends. Most of the night, if the ley line anomaly... But anyway, and it was... As for the Knights of Favonius, it's their job. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy. Whoa. The best way to... Anyway. Grape juice? The packaging is so... This is my personal favorite grape juice. I didn't know it's on the house. Woohoo! This one bottle must be worth at least, like... Thank you so much, Master D. Luke! There are, however, yes. ये तो Though I बातचीत had में my... बिजी हो गए Since भाई ये this लोग। इनको भूल ही गया कि हम गेम खेल रहे हैं, एनिमे नहीं देख रहे। Right! Sure! Wait, no... Well, in that case... Okie dokie, Captain Pyro! Come on, let's go! शुक्र है। भाई ये चीज मिल गया, जूस मिल गया क्या? यहाँ पे आऊँगा। एक सेकंड आपको ऐड करने दीजिए। आठ 813 71 20 31 यही है ना आपकी? देखिएगा आईडी। ओ भाई, भाई का अकाउंट देखो भाई साहब, 99 सही है भाई। स्पाइरल एवजेस 9। ओ भाई रिक्वेस्ट भेज दिए, आप ऐड कीजिएगा। ओ भाई आयका बना रखा, आयका बढ़ा रखी है आपने। ये तलवार इसको गलत नहीं दे रखी है आपने, पर रिफाइन कर रखी है 5 बार ना। पर इसकी स्किल के लिए हिसाब से वो सैक्रिफिशियल ज्यादा बढ़िया नहीं है। इसका बेस डैमेज थोड़ा कम है ना। पीस है इसके पास में। ओ भाई फ्रोजन हेलमेट सही है। अच्छा ये बेस्ट है। ओके ओके आया तो बैकलिफ्ट दे रखी है इसको। हाँ ये भी बढ़िया है, डैमेज बढ़िया है इसका। ये रिफाइन नहीं है अभी ना। ग्लैडिएटर सेट बोनस मिल रखा है इसको भाई, सही है भाई। 2 पीस पहना रखा है। सही है भाई। हाँ हम तो छा गए हो पाजी, तुसी ग्रेट हो पाजी, तुसी तो छाए हुए हो दिलावर पाजी। दिलावर पाजी आप ओपनिंग कैसे करते हो जेम्स की? आपका भाई भी देखो कल से इकट्ठे कर रहा है, 1200 किए हैं अभी इकट्ठे कर करके। दस से कम नहीं खोलने यार, 10 से ज्यादा खोलूंगा। 10, 15, 14, 18 ऐसे खोलूंगा कुछ इस रेशो में। आप करते हैं जमा या आप साथ के साथ? मैं पता है जब से आईडी बनाई है ना तब से साथ के साथ ही, जैसे 160 में बट से खोल देता था। इसीलिए शायद मेरे पास प्लेयर भी नहीं है ज्यादा बढ़िया। 5 स्टार नहीं मिला मुझे ना, वो भी नहीं मिली पता है। वो क्या बोलते हैं ये लोग अब इनकी लैंग्वेज में, वो जो रहम कर देते हैं कि गरीब है, इसको कुछ नहीं है इसके पास में, इसको दे दो, वो वाला टाइप का, वो भी नहीं दिया मेरे को।
ओ भाई, ओ भाई 17,000 है भाई साहब। अरे भाई क्या करोगे इतने, कर दो ओपनिंग। ओ भाई साहब, दिलावर भाई सही है यार। डरा दिया भाई ने नंबर बोल के। दिलावर भाई ये 3 व्हील्स इसका ही है क्या, आर्कन का ही है क्या, आर्कन का इसका 3 विशेस। अच्छा आज रात को आप भी बैनर का वेट कर रहे थे क्या। ओ भाई दिलावर भाई वीडियो बनाना इसकी, मेरे साथ मेरे को शेयर करना कहीं भी, या इंस्टा पे शेयर कर देना। मैं आपको इंस्टा दे, आप अपना मेरे को वो लिखो, मैं आपको इंस्टा पे भेज दूंगा। क्या क्या निकला बताना मुझे। आप ना हीरो इज लाइव है उसने ना आज इसकी याजिमिया ये जो 5 स्टार कैरेक्टर आई है ना, इसकी ओपनिंग करी थी, 2-3 लोगों को खोल के दिया है। तो आप उसकी एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना और वो सब वो ज़रूर कर लेना। वो ट्रिक्स ही लगा रहा था कोई, ठीक है, तो वो लगाना, आपका भी ज़रूर खुल जाएगा। हीरो इज लाइव करके चैनल है उसकी, आज की लाइव में ना बीच में देख लेना, मतलब बीच में, मतलब शुरू से लेके बीच में उसने बैनर का लगा रखा है। उसके बाद वो अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट लेके फिर उनका खोलता रहता है, तो उसमें आप देख लेना। और ये बताना ये 3 विशेस वाला ये क्या, चेक करना प्लीज। ये आर्कन क्वेस्ट का ही है क्या। अच्छा आप जानते हो, ठीक है ठीक है। आप बड़े लेजेंड टाइप के लग रहे हो यार इसमें, सही है भाई। ओके ये 3 विशेस करना है ना, इस पे जा रहा हूँ। आप मानोगे नहीं, मैंने साला वो सांप जो है ना वो इससे मार दिया भाई। मेरे प्लेयर अभी छोटे लेवल के थे, बहुत मुश्किल से मारा है वो, पता है। ये इसको हौजियों के लिए चाहिए था। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, ऐसे टेलीपोर्ट भी होना होता है। चलो अच्छा है यार, आज ही स्ट्रीम शुरू करी है मैंने और मतलब पहले दिन ही लेजेंड भाई से टक्कर हो गई। अब बढ़िया है साला, अच्छा सफ़र रहेगा, सब सिखा देना आप तो ये सब फेस से गुजरे हुए हो ना। I've been waiting for you. ओ काने, क्या हाल है कानिए? I have been informed about Jean falling ill. On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. So courteous and... Now, in addition to that thank you message, there was one other thing. I must say I like your style. But before we can discuss a reward, there are some things I hope you could... Things like... Right. I am concerned that... So I am hope I will feel... You can flatter us all you want, but answer me this. Why don't you do it? Oh, I have far more important matters to attend to. There are so many things to... Fine then. So it's Sarah, Charles, and Margaret's stuff you want us to help with, right? Those are the ones. I appreciate the help. See you. तो भाई क्विज कंप्लीट हो गई, ये तो मजा आ गया भाई। 425 पॉइंट मिल गए भाई साहब, सही है यार।
छोटी छोटी क्वेस्ट ही हैं, इसमें कोई बड़ा कुछ है नहीं, ऐसा कोई मार धाड़ करनी है, बहुत बहुत पेलना है कोई। मतलब ये वाले में, आर्कन वाले में टपकाने है, मतलब मिलना जुलना ही है सबको, मतलब डिलीवरी बॉय का काम करना है ज़्यादा। तो इसका सामान उधर, उसका सामान इधर, इसको उठा के उधर, वही करना है। खाना बना लेता हूँ यार, कुछ खाना नहीं है अपने पास में। हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई आटा, हाँ भाई चीनी, हाँ भाई मछली। आटे खरीदने पड़ेंगे यार, आटा ले लेते हैं, कोई नहीं। पहले बनाओ ये वाला। अरे स्पेशल कुक है भाई, हम परफेक्ट ही बनाते हैं। स्टैमिना के लिए भी हो गए 2। अभी हीलर चाहिए यार, हीलर ले लेते हैं। ओहो एक बोनस, नाइस बनाया एक। अरे भाई साहब ये तो मजे आ रहे हैं भाई। कार्फ लेली भी बना लेते हैं, क्रैब हम इसीलिए पकड़ते हैं, हमें पता है हमारा काम बन जाएगा इससे। आलमंड वाला, इसे इंक्रीज ऑल पार्टी मेंबर अटैक बाय 4 से 55 30 सेकंड के लिए। ठीक है, बॉस मारने में काम आएगा। पाँच बहुत मैं तो मार ही दूंगा बॉस। मशरूम ये चाहिए, थोड़ी थोड़ी एचपी बढ़ती रहे भाई। कैरेक्टर है अच्छे, सब मस्त लगा रखे भाई। हाँ ये चाहिए भाई। कितने हैं? 5 ले लो भाई, 5 पूरे ले लो। खाना खत्म हो गया ना, 3-4 बॉस मार दिए ना आज लड़ लड़ के सबसे, तो फिर सामग्री खत्म हो रखी है हमारी। स्टॉक फुल करेंगे फिर अभी। ओ भाई किस्मत भाई, नाइस। 1 मोर टू ऑटो कुक, ऑटो कुक लग गया भाई, ऑटो कुक। मशरूम पिज्ज़ा भाई, पिज्ज़े से पिज़्ज़ा याद आ रहा है। पिज़्ज़ा ये वाली डिश जानते हो, बर्बरदोस। ये वाली मैं वीडियो देख के लिया था, और ये जब मैंने आईडी ओपन करी तभी ले ली थी, पता है बहुत आराम हुआ इससे। दिलावर भाई इससे बहुत आराम हुआ था। बारबेटेस वाला स्टेमिना डिश है ना, फ्री डिश है ये, खरीदी नहीं है, मिली है वो टावर में जाकर स्टॉर्म बैरियर पे। स्टेमिना हो गया। ये कौन सी है? एचपी है, छोड़ो ये अटैक वाली ले लेते हैं। स्टॉक खत्म हो रखा है खाने का ना पूरा, कुछ भी नहीं है पास में, सब रिवाइव वाला सारा खत्म हो रखा है। अभी जाके राशन भी खरीदना पड़ेगा, राशन भी खत्म है। ओके ठीक है, वैसे मैंने सारा वर्ल्ड खोल दिया है, पर अब आर्कॉन करूंगा। अब मैंने सोच ही लिया था कि क्वेस्ट करना है और लेवल अप करना है, मुझे प्लेयर लेवल अप भी करना है ना। ये जो मेरे पास ये जो टीम बना रखे है ना मैंने, इनको थोड़ा अप कर देना, क्योंकि मेरे पास फायर प्लेयर नहीं है ना कोई। फायर प्लेयर कोई भी रहता ना एक, तो भी काम चल जाता मेरा। ड्यूलुक टाइप का भी रहता ना कोई। आज 1600 पे ओपन भी करना है मुझे। योगी माया निकाल के रहूँगा आज मैं, मेरा टारगेट है आज।
चलो फूड ले लिया भाई अच्छे से, फेल के दाब लिया पूरा एकदम, पेट भर लिया। अब मैडम की बात दुख सुख तकलीफ और ये सब कुछ कर देते हैं। Got it. All set. Amber! Oh, hi! Yeah. Oh, Sarah, you missed another bizarre order. Really? Yeah, well, why don't you take... Are you sure? We're well past the... A fight? Okay, go and get ready. Oh, तैयार करवा रही है भाई साहब, ये कपड़े वपड़े पहनवा रही है। कलेक्ट 3 स्वीट फ्लावर एंड 3 फॉल। ओके कर देते हैं। कहाँ से करने हैं ये तो बता दो। कहाँ से करने हैं? Have you brought me 3 sweet flowers and 3... ये ले ले ले। ओ यार मैं वो खा गया पका के, लाता हूँ पकड़ के, रुक। ये बिल्ली तेरे से बनेगा क्या? अब कुत्ता है बे। ओ भाई आंखें खराब हो गई मेरी, कहते ही आंखें खराब है भाई मेरी। अरे कहाँ जा रहा है? कबूतर मारूंगा मिल जाएगा। जा रहा हूँ कबूतर मारने। आलू लो, भिंडी लो, इधर आओ, भिंडी वाली सब्जी दो। हाँ साल्ट है भाई बहुत ज़्यादा है, ये भी है। प्याज 200 रह गया, ये ले लेते हैं थोड़ा सा। दूध भी कम है, दूध हमारे बहुत काम आता है, हम बहुत काम बनाते हैं दूध से। टमाटर है भाई, खरीदो टमाटर। टमाटर भी है, कैबेज हम लूट लेते हैं। और ये आटा, आटा बहुत जरूरी है भैया, आटा खत्म तो काम 25। Welcome. How can I help you? चलो तुम मत हेल्प करो, ले भाई Have सारा। you brought me 3 sweet flowers? ले 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 फटाफट चक चक भी सारा। Enjoy. Yep, that's everything. Now, order number 7 is for 1 sweet madame. and so begins the story of us becoming basic kitchen hands. You did say you'd help Good Hunter out. Be sure to serve it while it's hot. स्वीट मेड में, स्वीट मेड में, स्वीट मेड में कहाँ पे? स्वीट मेड में ये रहा, ये लो मैडम, ये लो, टेक इट, वी आर वेरी गुड कुक एंड दिस इज टेक इट। ऑटो भी ऑन हो गया मेरा इसका। लो जी सारा मैम। Any news on that sweet madame? ये लो ये लो ये लो ये लो, 2 हैं, एक ले लो आप। 1 sweet madame received. This smells absolutely divine. This is nothing less than what I would expect from a head chef, never mind a sous chef. इंजुमा, अरे मैंने क्वेश्ट कर दिया था Since you cook so well, you might as well take this sticky honey roast क्वेश्ट करके next. किया मैंने दिलावर भाई। Sticky honey roast? I'm sure she's heard Amber मैंने and चाचू Kaya फोन किया, mention चाचू this से one क्या फिर इंजुमा। before. That's right, a mainstay of the Good Hunter menu. It's my pride and joy. अब तो वो सारा नाटक The बंद knights कर order दिया। it almost every time they come here for a gathering. अब Let me एक्चुअली teach you the लोड करने के recipe लिए for मेरे a पास बहुत sticky कुछ है। honey roast. Wait, हाँ बीडो के didn't सिप you से, say हाँ जी it's हाँ your जी वहाँ pride से and किया। joy? With your cooking skill, as soon as that... वैसे मैं ग्लिच यूज कर सकता था पर मेन आइडिया ना इसलिए नहीं करा मैंने कहा भाई ग्लिच यूज नहीं करना।
वो ग्लिच भी है ना, वो स्टॉर्म बिलियर के ऊपर जाके वहाँ से वो वाला नहीं यूज़ नहीं किया मैंने बोला नहीं करना भाई। फिर मैंने तो क्वेस्ट के थ्रू खोला है जेन्युइन तरीके Body से। and mind. आज ही खोला है, सुबह ही तो खोला है, सारा मैप खोला है सुबह आज इन जगहों का। क्या करना क्या है मैंने सुना नहीं। I'm still waiting on one sticky honey roast. Have you got it? हनी रोस्ट बनाना था क्या? अभी बनाता हूँ हनी रोस्ट। हनी रोस्ट अब I'm क्वेस्ट से हो still जाता waiting on है। one sticky honey roast. Have you got दिलावर भाई it? क्वेस्ट से हो जाता है। That's a nice haul. क्वेस्ट से हुआ है मेरा तो, वैसे भी 30 लेवल के बाद तो वैसे भी कर सकते हैं। मेरा एयर 35 है ना। अरे यार कैसे बनाना है, क्या करना है देखना जरा सा। अच्छा अच्छा, आपने ग्लिच से ट्राई किया था क्या? नहीं यार मेन आईडी है ना, मैं सोचा नहीं पंगे नहीं लेने, मतलब लिया ही नहीं मैं पंगा में तो। यार हनी रोस्ट टाइप का कुछ बोलिए या बनाने के लिए, उसकी रेसिपी मैंने उठा लिया पर बन नहीं रहा है वो, मेरे को शो भी नहीं कर रहा है वो। क्या मांगे यार? कुक स्टिकी ऑन स्टिक हनी रोस्ट, स्टिकी हनी रोस्ट, स्टिकी हनी रोस्ट, कुक स्टिकी हनी रोस्ट। देखो उसकी रेसिपी कहाँ है? स्टिकी ऐसे ये रहा। हाँ सामान देखना पड़ेगा। एक तो चीनी नहीं है प्रोसेस्ड, चीनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। मीट खरीद के लाना पड़ेगा, मीट मार के, मुर्गा लाते हैं मार के। शुगर बनने को लगा देता हूँ। और यहाँ से चाहिए मीट, चाहिए गाजर तो है, आता हूँ अभी लेके। मीट चाहिए तो मीट मैप में लगा रखा होगा कहीं पे। सुअर मार बन जाएंगे अभी मारेंगे जाके। सुअर गाय बिल्ली कुछ भी मिला जो मार देंगे सब, कुत्ता बिल्ली सब मार देंगे। कहाँ है भाई? पकड़ो साले को। कहाँ है भाई? मैप में मैंने कहाँ मार्क लगाया था भाई, भूल गया भाई। अब दिख जाएगा। वो एरिया था एक बहुत तगड़ा जहाँ पे खाना मिलता है बहुत सारा दम भर के। देखे हैं ऐसे। यहाँ तो गाजर मिलेगी, गाजर भी ले लो क्या? चलो गाजर उठा लेता हूँ। गाजर भी 3 गो ही है, गलती वलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। ले लेते हैं गाजर। Body and mind.
सही बोले यार, होता है थोड़ा सा तो शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, सीखने में टाइम लग जाता है ना दिलावर भाई। एक्चुअली क्या होता है ना, हर गेम का एक मेटा होता है, वो समझना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो तो उतना तो लगेगा ही। रेडिश कैरोट, उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। Time to act. No, my sword! Witness the power of Gugwa! Time to act. चलो गाजर वाजर का तो जुगाड़ हो गया, मीट भी मिल जाए मजा आ जाए। मीट नहीं मिला यार। मीट 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 यहाँ बम्बू मिलता है, यहाँ फूल है, जुई चिली है, मैंने मार्क लगा रखा है पता है। अच्छा हाँ उसने बहुत सबकी मदद की, मैं भी उसका ही देखा थोड़ा बहुत, तो काफ़ी पता लगा, चीज़ें समझ में आई। अभी भी सीख ही रहे हैं यार, मतलब इतना जल्दी होता है 10 दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना, सब चीज़ एक ही दिन में सीख जाना। मैं तो ऐसा है ना, मैं वैसे मोस्टली गेम कोई भी खेलता हूँ मैं बोर हो जाता हूँ, पर ये वाली गेम ऐसी है कि जिसमें जितना खेलो उतना मज़ा आता है। ओ भाई हाँ, मैं भी छोड़ दिया पता है, सीरियस बता रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी दिन से कह लो कि आप मतलब जब से बैन होने के पहले ही छोड़ दिया मैं भी बीजीएमआई खेल। मैं कॉन्करर गया हुआ था सीजन 9 में, और मतलब बढ़िया टीम थी, हम लोग का क्लैन वैन भी था, सब साथ में बढ़िया खेलने वाले, जंगली वंगली बहुत अच्छे, मतलब अच्छे लेवल पे लोग जानते थे, पर मैं खुद छोड़ दिया भाई। मैं कहा भाई मैं भी छोड़ ही दिया, मैं कहा छोड़ो क्या करना। मज़ेदार गेम है एक्चुअली ना, बोर नहीं करती है सबसे ज़्यादा। बीजीएमआई खेलोगे ना आप, एक टाइम के बाद लाइबिलिटी लगने लग जाती है वो गेम। वो उसको ही मज़ा आएगा जो साला मार रहा है, जो बेचारा मरता होगा दूसरा गेम शुरू करता होगा, 1-2 केडी वाले को क्या मज़ा आएगा बताओ। Maybe I'm not cut out to be a huntsman. We got a situation. चलो भाई मीट मिल गया। अच्छा आप सीजन 2 में खेलते थे? अरे वाह।
नहीं, मैं भी गेम जब आया था तब से खेलता हूँ, मतलब मैं सीजन 9 में पहुंचा था, कॉन्कर I'm किया था। still waiting on one मतलब sticky तो honey. डिवाइस ले लिया था, तब थोड़ा सा सीरियस होकर खेलने लगे अच्छे से। Oh, I am sorry. This is the noobness. What I did. I take all responsibilities. कोई भी बना सकता है, तो बारबरा को लगा देते हैं ना। चल बारबरा तू ही बना। भाई एनर्जी है, एनर्जी वाला फूल I'm है। still waiting on one sticky honey rope. ये ले भाई, ले ले। आंटी गुस्सा करने लग गई। This is... Wow! Did you really cook this? This is quite simply astonishing! अच्छा जी, You were born to be a head chef. Are we released from kitchen बस duty घमंड नहीं now? क्या? Yes, thanks ever so much for your help. Amber should be able to take care of everything else. If you ever get tired of being an adventurer, there'll be a job waiting for you at Good Hunter if you want it. हाँ, सुअर मार बनाओ हमको। साला जंगल भेज देती है सामान लाने, काम करवाती फ्री में। मार्गरेट मैडम कहाँ है? Today's recommendation. हाँ आओ चाची, तुमको क्या दर्द है? वो वेंटी खड़ा है वहाँ पे। So, yours is the cat that went missing. Venti! Have you come to Me here to help you? Why, on the contrary, it is. But Paimon just saw you talking to Margaret. Aha! Though it glad. Prince is a mischief. Indeed. Just like Barbados. Yes, quite. Now, let's see about उसका getting नाम नहीं ourselves an पता ना audience दुनिया with को His कि वो Little बारबेडोस Highness है। Prince Rascal of वेंटी पता है Mondstadt. सबको, इसलिए I गलत have a चुप performance tonight, and without my spare. What would a kitty... Everyone knows. What? These lyre strings are made of astral iron, which contains animo energy. That makes them extremely durable, so I normally just roll them up in a ball to make them easier to carry. That's a trick of the trade from a traveling bard. The strings contain animo energy? That'll help us. It's time for you to use your elemental sight again. I'm unsure there must be some elemental footprints or something. Thank you all. Prince should be... oh, take this fish. It's Little Prince's favorite food. Maybe it'll help you find him. भाई साहब, बिल्ली पकड़ने भेजे हैं ये लोग। आओ बिल्ली, कहाँ हो? Hey, look! Over there! It looks just like the cat Margaret was describing. So it must be Prince, right? Wow, Prince has very keen senses. It didn't take much to scare him off. See if you can approach him crouching from behind. That way your footsteps will be quieter. It must be different if you're anxious if you run up. His senses are keener than we thought. He can't have gone far though. Why not track him with your elemental sight? Next time, try creeping up from behind. Quietly, of course. Or if you're feeling patient, use some fish as bait and catch him off guard. We grew up together after all. You better see Barbara at the cathedral tonight. Moon pie. That's what I'll make tonight.
Dandelions? Of course they're flowers. Pie. That's what I'll make tonight. Better see Barbara at the cathedral if you're injured. His senses are keener than we thought. He can't have gone far, though. Why not track him with your elemental sight? Next time, try creeping up from behind. अरे Quietly, of बिल्ली course. की ऐसी की तैसी. Or, if you're feeling patient, use some fish as bait and catch him off guard. Jules from Liyue. Come take a look. The animal archon protect you. Go ahead and pick up some. Drat! He's run off again. But where is he going? Paimon wonders if... यार दिलावर भाई ये तो बहुत तंग कर रही है यार. Prince! Oh, good boy! That's my prince. I knew you'd come home to me. Oh, Princey. Looks like those two need some time to themselves. Look at... Sure. Oh, I dare say that a private performance... करवा दिया कर दिया what? दिलावर भाई. Oh, now Paimon gets... Anyway, thanks for the help. I'll be going now. Don't want to add to Emily's troubles. And a radish veggie soup. Fountain. Here are my wishes. Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. वो भाई Fountain. सॉरी कोई काम आ Here are गया my था. wishes. Lisa, are you here about the tax return? Oh, hello, darling. You're quite right. After I heard about poor Jean, I thought I might lend a hand with some of her more literary duties. Cool. Well, if we're no longer needed here, we'll be on our way. Wait a moment. Actually, Charles here was wondering... Please, allow me, ma'am. I just took a rather important order. But unfortunately, we've run completely dry, and the delivery from the winery is behind schedule. If yeah, it's not too much trouble, आप भी आ जाओ. could you go and... What's so urgent about... दिलावर भाई ये It मिलिए. came in at the last ये minute. अमेज है अपने. Exactly. Hence the urgency. ये भी अपने पबजी के लेजेंड बोल लीजिए. पबजी के लेजेंड है. इनका भी बढ़िया गेम प्ले था, बट बैन हो गई ना. पबजी से इतना कुछ हुआ नहीं अपना. पर ये गेम बढ़िया है. इसमें ग्रोथ वगैरह भी अच्छी लग रही है मेरे को.
इनका भी देखिएगा, इनका गेम प्ले भी अच्छा है, इनका चैनल पे बहुत सा वीडियो है, भाई हैं अपने। Take it back, Ellie. I shouldn't get caught buying alcohol. दिलावर भाई अब क्या करना है? I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Xingxin infused water with ice is the most effective. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. दिलावर भाई आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना मेरी, जब आप आओगे ना ऑनलाइन गेम पे। अभी तो स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, बाद में फिर मेरे को एक्सेप्ट कर लेना, फिर मेरे को बताना ऑफ स्ट्रीम। Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. Get caught buying alcohol. चलो भाई, सॉरी कुछ काम कर रहा था। अच्छा रिस्पांस आएगा तो फिर मैं वीडियो वो भी करूँगा, लाइव कैमरा लाइव। ओ भाई 400 मीटर जाना है, व्हाट द फैक्ट, सॉरी। बकचोदी हो गई भाई। There is no purer form of water than rain. It अमेज can मैंने aid us अपने greatly in the purging of evil. मैंने प्लेयर अपना पता है वो कर दिया, लेवल 60 हो गया मेरा हाइजो। एक क्रेट ले लेते हैं ये दिलावर भाई। दिलावर भाई आपने जिंगलिंग बिल्ड की कि नहीं? जिंगलिंग जरूर बिल्ड कीजिए। जिंगलिंग और वो जो है ना, वो जो दूसरा कैरेक्टर है वाटर वाला, वो भी। आप कितने घंटे खेलते हैं दिलावर भाई इसको? बहुत ही टट्टी निशाना, पर हमने मार दिया गलती से। I want to help. हाँ ठीक है, इसलिए लिया आपको, हेल्प करो आप। Presence appearing out of thin air? This needs research. आवाज लकवा मार दिया, क्या हुआ? आवाज अच्छी नहीं आ रही क्या? आवाज अच्छी नहीं आ रही क्या? अमेज आवाज अच्छी नहीं आ रही क्या? हाँ आपको तो सब पता ही है भाई, सही बात है। The sun is already out? ट्रांसपोर्ट वालों? Oh, okay. Just one last experiment, and then we can get some rest. Last one, I promise. अमेज कह रहा है दिलावर भाई आवाज अच्छी नहीं आ रही है, बताइएगा जरा, नहीं तो कुछ करना पड़ेगा। अरे यार वो अभी मेरा माइक इशू है ना थोड़ा सा, अभी मतलब थोड़ा मैं सस्ता यूट्यूबर हूँ ना, इसीलिए। So this is... Have you come to rescue? And all the time I've been working. If you've taken any Fear not! just as well. कोई And बात नहीं, I'll be waiting up इसको सेट कर ahead. दूंगा। एक मैं लूंगा ना, माइक लूंगा यार, सही हो जाएगा। इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं हो रही है एक्चुअली, और कोई बात नहीं। अरे बैलून मुझे भी ले चल, अरे चाचा ले चलो, अरे अंकल उड़ा लो। अरे हैं क्या हो गया? ओ भाई
इस बार बैलून बचाना कि फोड़ना है दिलावर भाई? A touch of frost. हाँ बचाना है, बैलून की पावर कम है। ये लोग बैलून मार रहे हैं। Time to act. बच्चे बढ़ेंगे, बुला लूंगा चुंगी को तो मत करो। Animal test 6308. Yeah. सुक्रोज नाम तो सुना ही होगा। ओ भाई अबे उधर मार सस्ते न से। ओके बचा रहा हूँ, पहुंचा दूंगा सर, पहुंचा दूंगा। मैंने ले लिया है, क्या बोलते हैं उसको, मिशन ले लिया अपने हाथों में। टाइगर श्रॉफ, कतई टाइगर श्रॉफ बनूंगा मैं, कमांडो। अबे कहाँ जा रहा है अबे, डॉज करके भाई, ये मुझे डॉज करके उन पे जा रहे हैं, बड़े कमीने लोग हैं। अबे सालो मुझे मारो बे, उसको क्यों मार रहे हो? मेरा बलून से तोड़ रहे हो। Let me leave you a verse. मार साले को, जमा के मार, कपड़ी तोड़ साले का। तेरी जात का बैदा मारू। अबे ठुल्ली ठुल्ली तीर कौन मार रहा है बे? भाई दिलावर भाई, ऑल द बेस्ट मूवी देखी आपने? उसमें वो होता है ना, वो बोलता है पर बहरा होता है, वो कहता है गोलियां चल रही होती है बाहर, कहता है अबे पत्थर कौन मार रहा है बे, अबे पत्थर कौन मार रहा है बे? उसका दोस्त आता कहता है अबे साले गोलियां चल रही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पत्थर कौन मार रहा है बे? बाद में ना जब उसके कान के पास से गोली जाती है, बंदा कहता भाई अबे गोलियां कौन चला रहा है? कहता साले यही तो कह रहा हूँ इतनी देर से, गोलियां कौन मार रहा है, पर गोलियां चल रही है। Fourth, my blade. ओ भाई, हाँ भस्मा सुरा गाओ। अबे साले ससुरी के नाती, हमारा मिशन मोड तोड़ना चाह रहा है। बहुत मारेंगे तुमको, जमा के भेजेंगे। अभी बुलाते हैं उसको, तुमको मुक्के मार के ना सुपरमैन आ रहा है, देख अभी देख साले असली मुक्के लाते ऐसे मारेगा ना तेरे को, पंगे ले रहा था साले। भाई बहुत खतरनाक काम दिया इन लोगों ने यार, ये पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट कर दिया इन लोगों ने। अच्छा मूवी नहीं देखते क्या? ओके Thank you, my friend. I thought I was in deep trouble this time. I'll put in a good word for you with the gentleman. Think we're finally finished with the commissions we were doing for Jean. A day in the life of Jean really is hard. Wonder how she's feeling. बारबरा के पास जाना है अब, जीन की कंडीशन पूछने। उसको मैंने भर्ती कराया था ना जीन को। जीन बेहोश हो गई थी काम के प्रेशर से, तो अभी उसकी हालचाल पूछने बारबरा, हमारी जो हीलर है ना, बारबरा इज नर्स इन चर्च, सो वी आर रशिंग टू चर्च। ओ भाई इंग्लिश बोल दी क्या मैंने, 5-6 लाइनें कटी। ओ भाई इंग्लिश गेम खेल के भाई ऐसा होता है, सरकारी स्कूल भी होता है। Welcome back. बताओ। You must be exhausted.
Jean has regained consciousness and should be back to her normal self soon enough. मैं पानी पीने निकल गया था। Let's go and see her! But she just left the cathedral. I tried to tell her she needs more rest, but she wouldn't listen. She tried to act like she was fine and kept saying she wanted to get some fresh air. I bet you she's gone to Lady Vanessa's place again. Where? Oh, that huge tree at Windrise? That place is dedicated to Mondstadt's hero, Vanessa. Jean goes there whenever she feels lost and confused deep down inside. Barbara, that's some pretty personal stuff. How do you know so much about Jean's innermost thoughts? Jean, mentioned it to me, you know, before she left. That's what I'm worried about too. But I still have work to do here. Don't worry, we'll take over nursing duty for now. Great! That puts my mind at rest. May the Animo Archon protect you. And Jean. अबे वो तो जीन है, वो है एनिमो आर्कन तो चलो भाई। थोड़ा सा मैंने कहा पावर ले रहा था मैं। दिलावर भाई भूख लग गई थी यार, मैं कहा कुछ खा लेते हैं, आप भी खा लो। और भी कौन सा जिम से आ गया? Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I, or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Huh? Hi, Jean. Are you feeling better now? Much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Are you sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Oh, thank you. That means a lot to me. Hearing that boosts my spirits. But I must find a way to cope with minor setbacks like this on my own. Otherwise, how can I be the protector that Mondstadt needs me to be? The protector that Vanessa was. You truly revere Vanessa. I do. Vanessa was the first Grandmaster. As the Lion Fang Knight, she courageously overthrew the oppressive ruling aristocracy of her Dandelion Knight? Actually... Oh, that makes sense. You too want to be as gentle as the Dandelion Knight, and yet as fierce as the Lion Fang Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor, inheriting both these titles from Vanessa, but I see it more as a huge responsibility. After all, it is a lot to live up to. Okay, समझा। Paimon thinks so too. समझ गया दिलावर भाई। Jean? Who's there? Caught red-handed. Finally an opportunity
opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. How did they know about Jean's condition choosing this? As long as my name is the Dandelion Knight, I swear I shall not be defeated by such despicable means. Since this opportunity has slipped away, I shall now be Stop! After him! Jean, you're still recovering. No, I must go after him. Jean, you can't keep doing this to yourself. Why can't you trust us? I do trust you. दिलावर भाई आप अपना वो भेजो ना, अपना इंस्टा भेजो, इंस्टा मैं आपको ऐड करता हूँ। मेरा भी डिस्कॉर्ड है अपना, अपने चैनल का भी है, देखते हैं उसको एक्टिव करते हैं यार। कोई नहीं, हीरो भाई के तो बंदे ज़्यादा है ना यार, वहाँ पे फिर इतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे अपन। वैसे आप फेमिलियर हो ना उनसे, मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता उनको। वो पुराने खिलाड़ी हैं ना, पुराने प्लेयर हैं। क्या क्या मिलेगा? ओके, आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते कोई भी? अच्छा चलिए, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं तो मैं अपना डिस्कॉर्ड मेरा ऑन रहेगा, तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे वहाँ पे मेरे को वो हो जाना, मेरे पे ऐड हो जाना। मेरा भी डिस्कॉर्ड बंद है, मैं अभी ऐड नहीं किया ना, अभी तो आज मैंने यूट्यूब चालू ही किया है। आप समझ लो, आप मेरे पहले वाले मतलब फर्स्ट वाले लाइफ टाइम याद रहने वाले हो। अबे भाई साहब, डरा दिया अबे। Are you hurt? Ugh, darn him and his traps. How badly are you hurt? Oh, one of my own being injured because of me is the last thing I would wish for. Let me handle this alone. No, you are in no state to handle this alone. We're coming too. Okay, but before we move out, at least let me heal everyone with my dandelion breeze. Thanks. You're amazing. ओ भाई, जीन मिल गई क्या? अच्छा, जीन का टेस्ट है, खेलते हैं फिर, इससे मजा आएगा। ओ भाई, अभी बताता हूँ तेरे को। भाई साहब, क्या टीम बन गई बे जीन से। ओ भाई, पता नहीं लगा कब मर गए ये लोग। ओ भाई पता ही नहीं लगा कब मर गए ये। एक 5 स्टार कैरेक्टर आ गया ना मेरे पास, माँ कसम भाई। नाप दूंगा भाई, नाप। 22,000 का डैमेज तो अभी उठा रहा हूँ मैं।
you came. सही खिलवा दिया आपने दिलावर भाई यार, मजा आ रहा है भाई। टीम तो भाई बहुत खतरनाक है, ये निकल जाए तो मजा ही आ जाए। इसको बिल्ड करने में मजा बहुत आएगा टीम को। Confess. ओ भाई Spirit blade. Attack. Wind, hear me. नशे भाई नशे, क्या टीम लग रही है भाई, क्या टीम लग रही है। कोई भी बॉस खोल दूं मैं। उसको थोड़ी एनर्जी दे देते हैं, रुको एक स्टैमिना दे देता हूँ कुछ, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे देता हूँ। चलो अब देखो क्या गंदा मारेंगे ये लोग। Forth my blade. Rain outlines your fate. Absorption test. अब देखो मेन डीपीएस कैसे चलता है भाई। Bring it on. Get moving. ओ भाई, ओ भाई क्या मार रहे हो भाई, मजा आ गया। देख रहे हो एनर्जी रिचार्ज, देख रहे हो दिलावर भाई, देख रहे हो सबकी पावर कितनी जल्दी फुल हो जा रही है। ये सब आर्टिफैक्ट्स का कमाल है। साला नीचे गया भाई, पटक दिया। वो भाई सही है भाई, वो तो आपके कितने लेवल है ना, फिर वो तो फिर कॉमन, वो तो मारना ही पड़ेगा उसको। वो आपने उसको ब्रोक कर दिया ना, वो फिर तो खतरनाक हो गई होगी, मतलब अंगूठा दाबते ही वो कहर का नाम, उसका नाम कहर रखो बदल के। भाई भाई क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, मेरा समझ ही नहीं आ रहा, पता भी नहीं लग रहा बंदे मर कब जा रहे हैं यहाँ पे। Wind, hear me. Submit for judgment. खेल दिया क्या मैंने? Thanks to मेरा Barbara's 22,000 help, चला my जाता condition है, is पता है, better than I एलिमेंटल thought. डैमेज ब्रस्ट The मारने main पे। thing is that you're इसका safe. ये Now, होजुआ का isn't it time to get back to Mondstadt and rest? 22,000 अभी लास्ट हाईएस्ट Yes, लेके गया हूँ इसका। I should have. आने वाले 5-6 दिनों में 1 वीक तक इसको मैंने ऐसा कर देना है ना, मतलब बहुत खतरनाक बना देना। एक 4 प्लेयर की टीम तो इतनी गंदी रहेगी ना, मतलब कि एबिसिस वाला जो है ना, वो चैम्बर पूरा खाली करूँगा जाकर। उनका डैमेज भी तो यार लाखों चाहिए उसमें, 300 समथिंग इतना तो चाहिए उसमें मिनिमम। ये कौन से विलेज है, इसको भी फेल के जाऊंगा। A touch of frost. Rain outlines your fate. Rain cutter. Forth my blade. आवाज ठीक करो, क्या हो गया कुंदन, आवाज कैसी आ रही है? मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं है कोई, आवाज से कुछ करता हूँ रे। कल सेट करके आऊंगा, कल इस पे काम करूंगा।
दौड़ के कहाँ जा रहा हूँ यार, गजब यार एकदम मैं। अबे साले एक मिनट रुक, देखता हूँ स्ट्रीम चैम्स, इसमें साउंड का ठीक है। आप देख के बताना भाई, कुंदन आप देखना। Master, you... Swan, were you waiting for me? Yes, at the Angel's Share. Don't worry, it's nothing big, but... कुंदन आप देख के बताना आवाज। Okay. Huh? Well, it's fine. Oh, great. For goodness. Well, Wind go with you. कुंदन अब आवाज कैसी आ रही है, दिलावर भाई बताइएगा। ठीक है। ओ भाई चिकन विकन रखे ले भाई ये लोग। oh, what's all this? It's a thank you party for you! A thank you party? Jean, when we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as acting Grand Master, and you do so much work all over Mondstadt. We thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. Enjoy yourself, Jean. After all, you'll never let us do this once you're back at work. Jean? Huh? Is this Jean when she's shy? I've never seen her like this. It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. अच्छा। This really means... But... Fear not. पर मैंने तो लगाया नहीं, मैंने वही लगाया था। Really? It was no different. And the tax return... I spent so... Well, are you kidding me? That rascally... Enough already. It is एक my मिनट अभी honor. देखता हूँ, खोलता हूँ। Actually, our friend Silk Mountain, so relax already. Of course, we... I, like any other citizen of Mondstadt, Oh, All right, agreed. Now, let the party begin! It looks like everyone seems to be partying hard. Huh? अबे जाने की ऑप्शन नहीं दे रहे ये लोग। ये इन्होंने तो फंसा दिया भाई मेरे को। ऊपर जाना है क्या? मेरे तो तलवारें भी निकल जाती हैं भाई कहीं पे पार्टी के टाइम पे, बताओ। ओके ओके कर रहा हूँ। अरे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई। लॉल मैं सोच रहा हूँ भाई जीन वीन चला रहा हूँ भाई, चल क्या रहा है? Oh, it is you. Yes, I am just
Uh-oh. It seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. It is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits. And it has taught me something. What's that? हाँ भाई ये तो आप I am definitely more of a dandelion knight than the lion thing, but it was the dandelion knight that I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Let the wind lead. चलो ये हो गया। ओ भाई 60 जेम्स मिल गए दिलावर भाई। ओके दिलावर भाई बाय। फिर आइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई का चैनल अपने। Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. यहाँ जाने का? यहाँ क्यों जाने बोल रहा है? Now, this is what ये आर्कन वाला ही है ना? I call a moment of solitude. भाई ये कहाँ भेज रहा है मेरे को? आर्कन Hi there! Checking in, are we? You're just in time. Since this was chosen as the building site, so... Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. Here are your keys. Alright. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. Hey! Isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi.
One trusts you have met Shen He. So, are you getting along quite well? So far so good, yeah! So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen He to some degree. Cool! So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen He is human. Oh, right. Wait, what? What? You knew already? Do you mean to say that she presents one first inside was Shen He, then aged around 6 years old. That sounds so... When one arrived, she had already been locked in confrontation with this, that she was one dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied. In other words, if... Not necessarily. That's still so... Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shen He has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shen He's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhua because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not,
the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, Shenhua isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kinda hard to deal with. There seem to have been a growing number of tales told regarding Shenhe in recent years. Perhaps she was seen on the previous occasion when she secretly ventured out from the mountains. One has heard that a playwright in Liyue Harbor wrote an opera based on the legends told about her. It is called The Divine Damsel of Devastation. The play portrays her as making a stand to protect her fellow villagers. One can only surmise that every story needs a hero. A human raised by the Adepti is precisely what Liyue... It was on a just. Hey! So, Shenhua... Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, but before we do, after all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past.
That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey, Beto! And hey, person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunji. Greetings. These two are Paimon Shenhe. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here. It's an honor to finally meet you, to be honest with you. Wow. So, excuse me for prying. No, In that case, Lady Ningguang, instead of competing... Sounds great. The plastrite would... How'd I do? Precisely. Huh. Okay then. From what I've heard... We will head into town and seek advice... Wonderful. I'm gonna take off. See you later. Okay, by the way, I'm looking for a... Ooh, what? The opera is a... It's called... Time to act. Time to act. Body and mind. I just like to make people smile. Ah, hello. Are you here for... Excuse me, Master. Of course I have.
Sorry. My name is Yunjin? So, the types of No? if I remember correct, it could take some work, but if you stick with, of course, it... Mount Tianheng. Interestingly, I hear the view. Perhaps it can give me... Body and mind. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No!
Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! I never embark on a journey without a good book to accompany me. Excellent! Time to act. Body and mind. This should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there?
There really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Shenhua, Yunjin... Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know... Thank you, kind sir. Well, don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then What's this? So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjin. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. This is it! So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium! Let's go back and tell Shenhe the news! One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's.
I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us... Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be revealed in the next volume? Oh, drat. I never embark on a journey without a good book to accompany me. Time to act.
enormous. Oh my gosh. Wow. Huh? All will be... revealed in the next volume? Oh, drat. That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. Body and mind. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils too. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you.
So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us! Hanfeng's Ironmongers, here to serve. Time to act. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, the Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the plustrate yet! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome.
It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of... Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence!
Hi, just for fun. How are you? Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Hello, just for fun. Well, let's go fetch the Adepta! No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! Hello, just for fun. What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! Obey! Manifest! Time to act. Forth, my blade!
Unleash! Force my blade! Stand clear. Obey! Unleash! Let me weave you a verse. Manifest in your dreams! Obey! By ordinance divine! Unleash! My will embodied! Obey! Animal test 6308. Confess! Swift and merciful, from whence you came! Body and mind, time to act.